Hey guys, welcome to our world trip. And this is the second part of Shangarh. This is a very cute tree tent. So you live on a actual tree tent. So tents are hanging on the tree, and it's amazing. They were preparing for some people. They were supposed to arrive in the evening. और जो ये प्रिपरेशन कर रहे थे, इट वॉज लुकिंग सो गुड, एडवेंचरस एंड क्वाइट डिफरेंट. Shangarh is a very beautiful, small, cute looking village which is in Sainj Valley in Himachal. तो यहाँ पे आना बहुत सिंपल है. आप और तक आते हैं, वॉल्वो ले सकते हैं, बस ले सकते हैं. आप अगर सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं तो आपका बहुत सिंपल रास्ता है. ऑट से इसका रास्ता कटता है. एंड अगर आप वॉल्वो से आ रहे हैं तो आप यहाँ से टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको 1 से 1.5 घंटे तक शानगढ़ पहुँचा देती है. Shangarh offers a lot to captivate you. The main meadow, which is also known as Devta ground, the temples, waterfalls, lakes, secluded trails, the sunset, sunrise will make you want to spend more and more time in this little hamlet. So we are about to reach the waterfall, Shangarh waterfall, and this is the way, and it's quite steep. सो वी आर गोइंग टू शानकर वाटरफॉल. सेंच वैली अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एंड इट हैज़ अ लॉट टू ऑफर यू, एज हैव ऑलरेडी मैंशन बिफोर. तो जो ये रास्ता है, ये ट्रैक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल स्टीप है, एज यू कैन सी. एंड नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू रीच द वाटरफॉल. It is natural, raw, and the vibe of this place I cannot explain. It was so beautiful, different kind of experience, the sound of waterfall, everything. Look at this tiny, beautiful butterfly and the greenery. Now wait for something really beautiful. It's a wonderful place. You can take a little break and you can eat anything. And this is the local delicacy, as I've already mentioned before, सिड्डू. और ये इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया है, ये एक कपल ने बनाया है और हम उनसे आप आपको मिलवाते हैं. दिस इज़ ला chalet रिजॉर्ट एंड आरा कैफ़े. यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैक है, बट इट्स वर्थ इट. आपको यहाँ पे मोस्टली थोड़ा थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ द आरा कैफ़े. इट्स ब्यूटिफुली मेड. वी हैव मेट वेरी फ्रेंडली स्टाफ एंड द फूड इज़ रियली गुड. इतने हाइट पे आके, इतना आइसोलेटेड प्लेस पे, इतनी खूबसूरत प्लेस पे इतना अच्छा खाना मिलना, इट्स क्वाइट amazing. Just by looking at it, you can understand how tasty it is. And this is us together.
and more apples. The weather is totally unpredictable, and look at this beautiful rain. And after the rain, this is the view you can get easily. And some party time, guys, in the No Society Cafe. This is the new day and new beginning, and look at the morning view. So we are in a must-try cafe, which is a plant pot cafe, which is a vegan cafe, and vibe of this place is this. And now we are going to Rupi Raila Waterfall. Is one of the best waterfall of Sainj Valley and also a hidden waterfall located near the Raila village. This is quite unexplored place और ये इतनी beautiful थी as in monsoon the greenery was at its peak. In the description, I'll be providing all the details related to all the places we went, all the cafes, stays. मैं आपको सारी information description में mention कर दूँगी, so you can go and see. अगर आप plan कर रहे हो तो हम वहाँ पे कैसे जाना है, कहाँ रुकने की अच्छी अच्छी places हैं, explore करने के लिए क्या है, how do you as you can see in the video, it is very beautiful, but being there is a different experience. आप words में या videos में नहीं justify कर सकते ये कितना beautiful है. हमारा trip almost 1 week का था. एक दिन जाना and then we took some rest that day और उसके बाद एक दिन आने में लग जाता है. तो उसके according हमने plan किया था. थोड़ा सा tiring होता है इसलिए हमें relaxation के लिए जाना था. So we took a break and then we explored a lot of beautiful places, cafes, we went to temples. तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है yet आप बहुत अच्छा relax कर सकते हो यहाँ पे. And people who are looking for nature's therapy, this is the best place to go because you will feel connected to the nature. Just standing there was also an experience. As you can see, you can feel it. There was a Maggie point here, so we took a break. We had Maggie and then we explored a little more, as we'll show you in the video. Here is a very small dam which we explored randomly. और यहाँ पे कुछ सर्टेन जगह पे अलाउड नहीं है जाना तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गए थे. बट वी एक्सप्लोर्ड एंड वी जस्ट सॉ दिस क्यूट डैम एंड वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड. सो आफ्टर दिस वी वेंट टू स्टोरीज़ एंड मोर, जो कि हमें काफ़ी पसंद आया था. कैफ़े है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है. एंड वी ट्राई टू कैप्चर दिस ब्यूटिफुल सनसेट. And this is No Society stay where we stayed. They have a cafe also and view from this place is just wow. Thank you so much for providing us such a beautiful stay here. And this is the cafe where generally at night people come and play and they do jamming. Thank you so much for watching the video, and if you like the video please hit the like button, share with your friends and don't forget to show us love.